Okay, so lecture 29. Okay. Okay, see. ठीक है. So we are opening a new file merge.txt. ठीक है. And we are printing f.tel. ठीक है. So f.tel means the current cursor position. So obviously what we are opening a file in the, so it must be 0. Now we are doing f.seek bracket 5, and then we are printing the current pointer position or cursor position, so it will give you the 5 output. ठीक है. Now next we are doing f.seek 0, 2. ठीक है. So this is new for you, for all of you. This is new. So that means it will move the file position to the end of the file. To the end of the file. जैसे कि suppose if you want, if you are performing read and write both operation. ठीक है. So in that case, if you want to write something at the end of the file, then you must need to move your cursor position to the end of the file. ठीक है. So and we do not know how many characters are there, so we will use f.seek 0, 2. It will move the file pointer to the end of the file. ठीक है. Now we are running this and see. Can you see these three? Merge.txt, initially pointer position 0, where f.seek 5, then pointer position is 5, then f.seek 0, 2 to move the file pointer to the end. ठीक है. तो f.tel is 450. ठीक है. After that, if we print f.read, it will give nothing because pointer position is at the end of the file. ठीक है. So you can see the file here, merge.txt. This. Okay, clear. Now there are two more things which I will show you. Okay, देखो. So f.seek is what? There are two parameters. ठीक है. Second parameter is this. ठीक है. This parameter can be 0. This can be. ठीक है. Change the stream position. Change the stream position to the given byte offset. The offset is this. So second parameter till now we have not discussed. So today we are discussing the second parameter. ठीक है. So देखो अगर कैसे काम करते हैं. See, now there are, oh sorry, this one. Yeah. ठीक है. Now the second if the first parameter is greater than 0 and second parameter is 1. ठीक है. If the second parameter is 1, that means we are moving the file pointer with respect to the current position, not with respect to the start. Now with respect to the current position. ठीक है. Suppose I am my current position is in between the file. In between the file. Now there are two cases. You want to move ahead or you want to move backward. There are two cases. You are in the middle of the file anywhere and you want to move ahead or you want to move backward. ठीक है. So if you want to move your file pointer from the current position, then the second parameter must be 1. The second parameter must be 1. ठीक है. And first parameter is any negative number, that means move the file pointer ahead. ठीक है. And if the first parameter is negative, and if the first parameter is negative, that means move the file pointer in the backward direction. In the backward direction. ठीक है. With respect to current position, because the second parameter is 1. ठीक है. So now you can move your file pointer with respect to current position in the both the direction, either forward or backward. ठीक है. And the last one
where second parameter is 2. Second parameter 2, that means it is the end of the file. It is the end of the file. Okay? If the second parameter is 2, so the first parameter can be positive or can negative only. This see the second parameter 2 that means it is the end of the file. If it is the end of the file, then you cannot move forward. There is nothing. So if the second parameter is 2 and the first parameter is negative, that means you are moving the file pointer from the end of the file in the reverse direction, in the backward direction. Clear these three? These three clear? Eh? Yes, sir. Okay. If these are clear, then see. Okay. Okay. So now I'm just trying this one. Okay. This one. F dot seek 5, 1. So it will give you an error. Cannot do non-zero cumulative seek. Okay. Again, if we will do these three here, this will also give you an error. Okay. And the last one, this will also give you error. All of three are giving the same error. Now, so last three, this last three will only, so this last three will only work when you open a file in the binary mode instead of in the text mode. You need to open the file in the binary mode. That's why I have written here nodes. Okay. So if we using seek function in the text file, okay, we are using the seek function in the text file. Text file means those without opening in the binary mode. Okay, na? So if we are not opening our file in the binary mode, okay, then seek relative to the beginning of the file. Beginning of the file means only these three will work. Only these three will work. Okay. So if we are opening our file in the default mode, default क्या होता है? Default it is a text mode. ठीक है. So if we are opening our file in the text mode, then relative to the beginning of the files, ठीक है? That means you can perform only this operation. F dot seek bracket 0, F dot seek bracket में any positive number, and F dot seek bracket में 0, 2. Only these three are allowed. Okay. Now, if you want to use these three, other three, if you want to use other three, then if you want to use that, then you need to open the file in the binary mode. We need to open the file in the binary mode. Okay. Clear? Yes or no? Sir, can you explain this again? Okay. What I am saying, if you want to move the file pointer position with respect to the current position, with respect to the current position, then we need to open the file in the binary mode. We need to open the file in the binary mode. ठीक है. मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे. So my Jupyter notebook is visible. Yes, sir. ठीक है. Now ठीक है. So now the same question, but now this time we are opening our file in binary mode. देखिए यहाँ पे B लिखा है ना. Open in read and binary mode. ठीक है. By default, which mode is this? By default, it is a text mode. By default, it is a text mode. ठीक है. Clear है ना?
ठीक है. So now this time we are opening a file in the binary mode. Binary mode. This B. ठीक है. Now all things will work. ठीक है. So f dot tell will give you answer 0 क्योंकि you are opening a file in the read mode. और read mode में क्या होता है, current cursor position is always at the beginning of the file. ठीक है. f dot seek फिर print tell it will give you 5. ठीक है. f dot seek ब्रैकेट में 0,2 it will give you the end of the file. ठीक है. Now this one यहाँ से this all these. ठीक है. All these will work when you are working on a file which is opened in the binary mode. ठीक है. Binary mode. ठीक है. So f dot seek 5,1 इसका मतलब क्या हुआ? बताइए. Sir, it will move toward the current position. Yes. So f dot देखो पहले हमने क्या किया, f dot seek 0 ठीक है. देखो रन करते हैं. ओके. ठीक. देखें. ठीक है. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. ठीक है. सो f डॉट सीक ब्रैकेट में 5 मींस फाइल पॉइंटर इज एट द 5th कैरेक्टर फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है. नाउ दिस वन f डॉट सीक ब्रैकेट में 5,1 इसका मतलब क्या होगा? move the file pointer Ahead of the current. 5 character. Yes. So what will be the output of f dot tell? What will be the output of f dot tell? पहले से कहाँ पे था वो? पहले 5 पर था. It was 5. पहले 5 पर था. Then you are moving 5 character ahead from the current position. Then f dot tell will be 10. Yes or no? ठीक है ना? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. So f dot tell. Now if what does it means? f dot seek ब्रैकेट में -5,1 here. Sir, it will move the current cursor position to the. Yes, in the backward direction. Yes, sir. ठीक है. तो पहले क्या था, if previously it was at the position 10 character, then now it will be on the 5th character because the 5 character in the backward direction it has moved. ठीक है. Now this one. Sir, it will move to the end of the file. Back End of the file reverse से end order. of the file से 5 character in the reverse direction. Yes, sir. ठीक है. सो अगर मैं क्वेश्चन दूं, यू आर हैविंग अ फाइल एंड जस्ट प्रिंट द लास्ट 10 कैरेक्टर. जस्ट प्रिंट द लास्ट 10 कैरेक्टर. तो आप क्या करेंगे? f डॉट सी -10,2 और उसके बाद फिर f डॉट रीड कर देंगे. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. आप करके देखें यहाँ पे लास्ट 10 कैरेक्टर, लास्ट 5 कैरेक्टर. प्रिंट f डॉट रीड. So it is giving you b, by and cat. क्यों? Because इस फाइल में क्या है? इस फाइल में y है हमारे पास. y है, उसके बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर है. न्यू लाइन कैरेक्टर है, उसके बाद क्या है? कैट है, CAT. तो 5 कैरेक्टर क्या होगा? y, then न्यू लाइन कैरेक्टर, then CAT cat 5.
तो देखो ये 5 करेक्टर आ गए। बी क्यों आया? बी दे आर टेलिंग इट इज बाइनरी फाइल, दैट्स व्हाई इट इज बी। ठीक है, देखो बाई बैकस्लैश एन एंड देन कैट। ठीक है, अगर ये बाइनरी फाइल नहीं होती तो बैकस्लैश एन की जगह स्पेस रहता, मतलब सॉरी न्यू लाइन रहती, मतलब वाई रहता फर्स्ट लाइन में एंड कैट रहता नेक्स्ट लाइन में, बट इट इज अ बाइनरी फाइल, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग यू द आउटपुट इन दिस वे। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है, so this is clear. Now I am giving you one example to rename your file. In the last class we discussed this one, rename किया था हमने डिस्कस। हाँ देखो यहाँ पे कहता है ना, रीन os डॉट रीनेम ओल्ड वर्स कॉमा न्यू। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल देते हैं टू रीनेम योर फाइल, क्योंकि लास्ट टाइम भी डिडंट डिस्कस्ड एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, सो रीनेम, yeah this one, so renaming so to rename a file, what is the function? We need to use import os and os dot it is visible, import os. यस सर। ठीक है, so we need to use import os, that means operating system library, and in the os there is a module os dot rename, os dot rename। ठीक है, ब्रैकेट में ओल्ड फाइल नेम कॉमा न्यू फाइल नेम, ब्रैकेट में ओल्ड फाइल नेम कॉमा न्यू फाइल नेम। ठीक है, अब सपोज इन माय सिस्टम द फाइल का नाम है merge डॉट txt। ठीक है, आई वांट टू रीनेम दिस फाइल। ठीक है, आई वांट टू रीनेम दिस फाइल, नया प्रोग्राम लिख के दिखाते हैं। सो वी विल यूज import os एंड ओल्ड फाइल नेम ले लेते हैं, ओल्ड फाइल का नाम क्या है? merge डॉट txt, merge डॉट txt, एंड न्यू फाइल का नेम, न्यू फाइल क्या नाम रखना है इसका? सपोज इसका नाम रख देते हैं merge न्यू डॉट txt। सो नाउ वी आर रीनेमिंग दिस फाइल। ठीक है, अब यूज करते हैं os डॉट रीनेम, os डॉट रीनेम ब्रैकेट में ओल्ड फाइल कॉमा न्यू फाइल। ठीक है, सो वी आर रनिंग दिस। ठीक है, नाउ सी द आउटपुट। कीप इन माइंड यहाँ पर merge डॉट txt है, merge डॉट txt, यू कैन सी merge डॉट txt इन माय सिस्टम। ठीक है, merge डॉट txt। ठीक है, so now we are changing the, we are renaming this file using command line। ठीक है, okay, so run this command and see। okay, now successfully executed। now see, can you see the new file merge dot underscore new? यस। ठीक है, तो जो पुरानी मर्ज थी merge डॉट txt, कंटेंट विल बी कंटेंट विल रिमेन सेम, कंटेंट विल रिमेन सेम। ठीक है, बट द नेम वी हैव रीनेम्ड फ्रॉम merge डॉट txt to merge underscore new डॉट txt। so this is the simplest। now you can pass the whole path, you can pass it। देखो अभी क्या कहता, we have not passed any path। ठीक है, so it will assume that कि जो फाइल है ना merge डॉट txt, it is in your current working directory। ठीक है, सो इट इज इन योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, और जो न्यू फाइल क्रिएट होगी, जो रीनेम होगी, दैट विल आल्सो बी इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। बट इफ यू वांट टू पास द पाथ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि सपोज मेरे सिस्टम में
ओके, एक कोई जैसे डी ड्राइव है सपोज, एंड डी ड्राइव के अंदर एक कोई भी फाइल ले लो, बहुत सारी, जैसे सपोज ये फाइल है, ठीक है, डी ड्राइव के अंदर रोहित अंडरस्कोर डेटा के अंदर रोहित डेटा, उसके बाद फिर एक फाइल है राउटर डॉट सीपीपी, ठीक, कोई भी फाइल है, इफ यू वांट टू रीनेम दिस फाइल, ठीक है, then what we need to do, instead of just writing the file name, we need to write the full path, we need to write the full path, ठीक, clear है, yes or no? Yes. ठीक है, so we need to write the full path, ठीक है, अब देखो suppose now this time we are writing full path, तो path कैसे लिखते हैं, जैसे सी ड्राइव में सी कॉलन स्लैश पूरा पाथ लिख दिया, ठीक है, कीप इन माइंड, आपको याद होगा लास्ट टाइम वी वर यूजिंग डबल स्लैश साइन, याद है, यस और नो? Yes. ठीक है, if you are using this r here, अगर r यूज कर रहे हैं then no need to use double slash, if you are not using r then you need to use double slash, देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज किया है इस लाइन में, ठीक है, सो आइदर यू कैन यूज r ब्रैकेट में पाथ फुल पाथ, ठीक है, और यू कैन यूज फुल पाथ, बट जो बीच में जो सेपरेशन होता है, इंस्टेड ऑफ सिंगल स्लैश यू नीड टू यूज 2 टाइम बैकवर्ड स्लैश, ठीक है, नहीं तो सिस्टम एरर दे देगा। R is for read or R is just for the relative path, ठीक है, देखो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, लास्ट टाइम आप यू हैव स्टडीड दिस ओनली, देखो यू स्टडीड दिस, ठीक है, ये स्टडी किया था ना हमने, यूज फाइल नेम, वी स्टडीड दिस थिंग, ठीक है, क्लियर है, so if you do not want to write this double slash, then हम क्या कर सकते हैं, we can use this one, ठीक है, we can use this one, clear है, तो इसी तरह से फिर आपका न्यू फाइल नेम है, so now this time we are passing the full path, ठीक है, we are passing the full path, मैं कोई एक और फाइल देखता हूँ, ठीक है, whose name I can change, LMS, ओके, चलो मैं क्या करता हूँ कि पाइथन के अंदर असाइनमेंट फोल्डर है, एंड असाइनमेंट फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल है, इसको चेंज LMS, ओके, ये वाली फाइल को चेंज करता हूँ, ठीक है, तो इसका पाथ आई नीड टू कॉपी, तो इसके पाथ को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, सो ओल्ड नेम इज इक्वल्स टू दिस, राइट द पाथ, ठीक है, क्या पाथ था, LMS था, और फिर LMS के अंदर था अक्षित डॉट txt, AKSHIT डॉट txt, ठीक है, एंड न्यू नेम में हमें इसको क्या करना है, फुल पाथ वी नीड टू पास, ठीक है, सो इसको अक्षित न्यू कर देते हैं, न्यू, ठीक है, सो दिस टाइम वी आर पासिंग द फुल पाथ, ओके, ठीक है, इसको रन करते हैं एंड सी, ओके, इसको रन किया, ना वो फोल्डर देखिए आप, देखो इट इज विजिबल, ये मैं थोड़ा बड़ा करूँ इसको, रुको, बड़ा करते हैं, लार्ज आइकन, यू कैन सी दिस अक्षित न्यू, पहले अक्षित नाम की फाइल थी अक्षित डॉट txt, नाउ इट इज अक्षित अंडरस्कोर न्यू डॉट txt, क्लियर है, फाइन, यस और नो? yes sir. ठीक है,
So we can rename a file in another directory as well. If you want to rename a file from another directory, then we need to pass the whole path. Okay, clear hai? So now there may be the case that case the file is not exist in your system. Suppose you want to rename a file and which is not available in your system, तब क्या करेंगे आप? ठीक है. और सपोज यू वांट टू, जैसे सपोज यू वांट टू क्रिएट अक्षित अंडरस्कोर न्यू फाइल, बट अक्षित अंडरस्कोर न्यू इज ऑलरेडी इन योर सिस्टम. अक्षित अंडरस्कोर न्यू इज ऑलरेडी इन योर सिस्टम एंड यू डू नॉट वांट टू ओवरराइट दैट फाइल, तब क्या करेंगे हम? रीनेम अ फाइल आफ्टर चेकिंग वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट. ठीक है. तो सपोज नाउ करंट वर्किंग डायरेक्टरी में वर्क करते हैं. तो सपोज मर्ज अंडरस्कोर न्यू इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन माय सिस्टम. ठीक है. So if you just want to print an error message, if you do not want to overwrite this, then what we need to do, we will check. Old name we have written here, new name we have written here. We will check whether this file is already exist in my system. If it is already exist in my system, the new file, then we are not renaming. ठीक है, the file is already exist. Otherwise, we will rename. Clear है? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. जैसे देखो, we want to rename merge underscore new file और नया नाम क्या करना है उसका? merge underscore new 2 कर दिया. ठीक है. So now this will work क्योंकि merge underscore new 2 is not in my system. You can see merge underscore new 2 is not in my system. ठीक है. So this will work. This will work. ठीक है. This will work. You can see this will work. देखिए यहाँ पे हो गया. Now if you want to rename this file with the file which is already in my system, जैसे कि देखो बताते हैं. Now अगर आपको ये करना है जिसको ओके एंड कोई फाइल का नाम रख दो जो ऑलरेडी इन माय सिस्टम हो. test.txt कर देते हैं. test.txt. test.txt. ठीक है. नाउ इट विल चेक ये जो न्यू फाइल है, न्यू फाइल, the new file is already in my system. So first it will check os.path.isFile bracket new. If it is already in my system, then we are not renaming. We are just giving you that the file is already exist. Okay. If this new file is not in my system, then it will rename this. So देखिए आप. ठीक. os.path.isFile new name. test.txt lecture. test.txt. इसने रीनेम तो नहीं किया बट मैसेज नहीं आया. लेट मी चेक. ओके मैं चेक करता हूँ. जस्ट अ मिनट. print os dot path dot is फाइल. ठीक है. फाइल का नाम है टेस्ट डॉट txt. जस्ट अ मिनट. टेस्ट अच्छा पहले से है नहीं. टेस्ट डॉट सॉरी इट इज गिविंग ट्रू. ठीक है. पाइथन अंडरस्कोर लेक्चर्स नहीं, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दी. टेस्ट है ये टेस्ट. ठीक है. देखिए वो कह रहा है कि ना द फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट सो यू कैन नॉट रीनेम दिस फाइल. ठीक है. क्लियर है? यस और नो? हेलो.
हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आपका है इसमें रीनेम क्लियर। नाउ आई वांट टू शो डिस्कस स्प्लिट फंक्शन, ठीक है, स्ट्रिप फंक्शन एंड रिप्लेस फंक्शन, ठीक है। कहाँ रख दी, क्या करती है? कैन यू प्लीज म्यूट? निकालते करते खुद पूछेंगे कि आप कैन यू प्लीज म्यूट? ओके, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग स्प्लिट फंक्शन, ठीक है, बिकॉज आई सी देयर आर एट मेनी प्लेस स्प्लिट फंक्शन इज यूज, ठीक है। कल मैंने जो असाइनमेंट दिए थे उनमें भी स्प्लिट फंक्शन इज यूजिंग, ठीक है। सो द स्प्लिट मेथड स्प्लिट्स अ स्ट्रिंग, ठीक है। द स्प्लिट मेथड स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट, ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई द सेपरेटर, ठीक है। By default is it is a white space. By default it is a white space. So instead of investing time here, I will discuss with the example. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं कि लेक्चर 30 नो, ठीक है, तो फिर वहीं से कॉपी करते हैं, ठीक है। सो स्प्लिट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ओके, फर्स्ट सी द स्प्लिट, नो, text is equals to any text you just write here. Rohit is here. Okay, so suppose I am writing this text, ठीक है। Okay, now say I am writing text dot sp split and see what it does, question mark. So देखिए, text means any string, ठीक है, any text, ठीक है। dot split, what are the parameters here? There are two parameters. First parameter SCP, second parameter is max split, ठीक है। It will return a list. It will return a list of words in the string. It will return a list of words in the string, and how it will separate the words depend on the based on the separation SAP. If it is a space, then it will find the space, and before space and after space it will divide the string, ठीक है। यूजिंग SAP एज अ डिलिमिटर। अगर आप कोई और साइन यूज करना चाहते हैं जस्ट लाइक हाइफन, that it will check hyphen, and before the hyphen, after the hyphen, it will extract those words, ठीक है। so and delimiter as a string separation हो गया। max split means number of split you want to do. Suppose you want just restrict 5 maximum split, you want 5 maximum word, so you can pass that also, ठीक है। default value is -1, that means no limit. Now just see the example here, ठीक है। okay, L is equals to and print L, print print bracket में। now anyone can tell me what will be the output? Anyone can tell me what will be the output? Hello? sir, it will divide the string of text. हाँ, तो ये आएगा रोहित देन स्पेस के बेसिस पर, ठीक है, स्पेस के बेसिस पर। तो स्पेस यहाँ पर है रोहित अग्रवाल के बीच में, सो रोहित डिफरेंट, अग्रवाल इज 1, देन इज, देन ए, देन बैड, देन टीचर, ठीक है, क्लियर। अब एक और एग्जांपल देते हैं एंड सी, अब मुझे आउटपुट बताना आप। ओके, मैं नाउ इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे मैं हाइफन साइन रख रहा हूँ, ठीक है। ओके, नाउ यू जस्ट टेल मी द आउटपुट SEP is equals to
Okay. Now tell me the output. Sir, it will remove the hyphen. हाँ, आउटपुट बताइए मुझे. Just give, tell me the output. ठीक है. It will remove the hyphen and the whole string will be printed. नहीं, आउटपुट में लिस्ट आएगा या कुछ और होगा, पहले से बताइए. There will be a list. Yes, sir. लिस्ट में how many elements are there? फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा? So this Rohit, पहला एलिमेंट रोहित होगा. सेकंड एलिमेंट क्या होगा? sir, Agrawal, and then third. नहीं 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 नहीं, थर्ड Sir, अग्रवाल. हाँ हाँ, यस. sir, first Rohit will come, then Agarwal is next of this string will come. अग्रवाल इज अ बैड पूरा होगा. देखो, Yes. अग्रवाल इज अ बैड बिकॉज नेक्स्ट हाइफन यहाँ पर है. ठीक है ना. तो नेक्स्ट हाइफन यहाँ पर है, तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरा वर्ड हो जाएगा. क्लियर? Yes, sir. ठीक है. एक और एग्जांपल देखो. ओके, सो दिस टाइम मैं यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ. हाइफन. ठीक है. मैक्स लिमिट इक्वल्स टू 3. ठीक है. मैक्स लिमिट इक्वल्स टू 3. नाउ सी द आउटपुट. कुछ और होता है. जस्ट अ मिनट. टेक्स्ट डॉट स्प्लिट क्वेश्चन मार्क. मैक्स स्प्लिट ही तो लिखा है इसमें. अच्छा, स्प्लिट है, मैंने लिमिट लिख दिया. मैक्स स्प्लिट SPLIT. आपको याद है ना वो कीवर्ड आर्गुमेंट्स नहीं हो पाया था. ओके, सी. सो दिस टाइम आपके जो आउटपुट होंगे मैक्स स्प्लिट 3. मैक्स स्प्लिट 3 मीन्स इसमें क्या होंगे कि ये पहले 3 स्प्लिट करेगा. सो रोहित, देन अग्रवाल, देन इज. उसके बाद जो भी होगा इट विल बी एज अ सिंगल वर्ड. इट विल बी एज अ सिंगल वर्ड. अगर मैक्स स्प्लिट 4 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तो देन इट विल गिव यू 4 कैरेक्टर. और 5th कैरेक्टर जो भी होगा वो रिमेनिंग जो भी स्ट्रिंग है, द रिमेनिंग स्ट्रिंग विल बी एज द आउटपुट ऑफ 5th. देखिए, आई यूज्ड मैक्स स्प्लिट 4. मैक्स स्प्लिट 4 मींस टोटल 5 वर्ड्स होंगे. 5 वर्ड. ठीक है. फर्स्ट वर्ड रोहित, सेकंड वर्ड अग्रवाल, थर्ड वर्ड इज, फोर्थ वर्ड ए. ठीक है. एंड द रिमेनिंग स्ट्रिंग विल बी द 5th वर्ड, whatever is available. Clear है? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. तो फिर ये हो गया आपका. ओके, नेक्स्ट स्प्लिट. तो स्प्लिट क्लियर है. इट विल यूज्ड एट मेनी प्लेसेस इन योर प्रोग्राम. ठीक है. स्प्लिट हो गया ना. स्ट्रिप मेथड. ठीक है. स्ट्रिप मेथड. तो थ्योरी यू कैन रीड हियर. ठीक है. मैंने थ्योरी लिखी है, डिटेल में भी लिखा है. सेपरेटर क्या होता है, मैक्स स्प्लिट क्या होता है. ठीक है. सेपरेटर और SCP भी कहते हैं. यहाँ पे चेक कर लेना. SCP भी बोलते हैं इसको, जैसे कि अभी SCP आ रहा था उसमें. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द स्ट्रिप मेथड. ठीक है. ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे स्ट्रिप, STRIP स्ट्रिप क्वेश्चन मार्क. ओके, सी. ठीक है. स्ट्रिप क्या करेगा? इट विल रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग with leading and trailing white space removed. Leading and trailing white space removed. जैसे कि आपको याद, क्वेश्चन मैंने एक बोनस क्वेश्चन दिया था. बोनस क्वेश्चन में आई गेव यू, यू हैव हैविंग अ फाइल, और फाइल में देयर आर नेम्स ऑफ योर फ्रेंड. नेम्स ऑफ योर फ्रेंड. ठीक है. सो इफ यू वांट टू create so many files of your friend's name,
and you are reading the name from the text file, तब strip method का use किया था to remove leading and trailing white spaces. ठीक है, तो देखिए रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विथ लीडिंग एंड व्हाइट स्पेस रिमूव्ड. ठीक है, अब मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ. ठीक है, तो कोई भी एक टेक्स्ट ले लेते हैं. टेक्स्ट जस्ट लाइक दिस, जैसे कि आपने रोहित है, बट इस तरह से रोहित नहीं लिखा. ये है सपोज, ये है. ठीक है, एंड यू वांट टू जस्ट प्रिंट रोहित, तो उसके आगे के व्हाइट स्पेस और लीडिंग स्पेस और ट्रेलिंग स्पेस यू वांट टू रिमूव बिकॉज यू वांट टू यूटिलाइज दिस टेक्स्ट. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज टेक्स्ट अंडरस्कोर, कोई भी नया नाम रख देंगे, टेक्स्ट डॉट strip स्ट्रिप. ओके, इसको प्रिंट करा देंगे. ठीक है, नाउ सी. ओके, PRI एंड T, पहले दोनों को प्रिंट कराते हैं, देन यू कैन सी द डिफरेंस. नाउ सी द डिफरेंस. ठीक है, तो पहले वाले में क्या रहा है, इसकी लेंथ भी प्रिंट कराते हैं, देन लेंथ ऑफ टेक्स्ट एंड लेंथ ऑफ टेक्स्ट अंडरस्कोर अपडेट. ठीक है, इसकी लेंथ 17 है, इसकी 5 है. व्हाई? because इसमें you do not know how many trailing white spaces are there, how many white spaces are there after Rohit. ठीक है, so रोहित 5 करेक्टर हैं, तो टोटल 12 white spaces हैं maybe. ठीक है, clear? So if you want to remove this trailing or these white spaces, we can use strip. ठीक है, और भी देख सकते हैं strip में. ठीक है, if the character is given and not none, remove characters in chars instead. ठीक है, अब कुछ और देखते हैं करके. ठीक है, इसमें हम इसको पास करके देखते हैं कुछ. ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है. द सेम कोड. okay, but in this time we are passing something. okay okay, देखते हैं आर ओ पास करके देखते हैं. ठीक है, we do not know. नहीं, ओ उसको कहीं नहीं मिला. कुछ एग्जाम्पल देखता हूँ मैंने, आई थिंक इसमें एग्जाम्पल लिखा हो. ओके, इट लर्न पाइथन आउटपुट मैसेज. ओके, remove characters in chars instead. Okay, remove character. Okay, remove characters in chars instead. If chars is given and not none. Okay. इसका कोई एग्जाम्पल मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी. chars equals to, let's see, it takes no keyword argument, so we can't write this. Okay, ये भी नहीं. By default it is okay. ऐसा करते हैं, यहाँ पे कुछ और लिख के देखते हैं. ओ ठीक है, नाउ यहाँ पे ओ पास करते हैं. सॉरी, नहीं, ओके, मैं देखता हूँ कोई अगर एग्जाम्पल हो. ठीक है, अदर देन व्हाइट स्पेस, देन आई विल चेक. ठीक है, क्लियर है? यस और नो? हेलो. Yes, sir. So I will check, is there any example for this? ठीक है, other than white space. ठीक है, I want to check other than white space कुछ हो सकता है कि नहीं. They are just here telling
remove characters in chars instead. In chars, remove characters in chars instead. I don't know. ठीक है, इसका देखते हैं फिर. Okay, so the next is okay. Next is a replace. ठीक है. Replace method क्या करता है? Replace method replaces a specified phrases with another specified phrase. ठीक है. जैसे कि suppose you want to remove space from the file. ठीक है. And instead of space you want to use hyphen sign. ठीक है. So we can use replace. ठीक है. All occurrence of specified phrases will be replaced. ठीक है. एक एग्जाम्पल देखते हैं. तो सेम एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है. यहाँ से ओके टेक्स्ट ओके ओके रिप्लेस. ठीक है. व्हाट यू वांट टू रिप्लेस व्हाट है? आर की जगह हम यहाँ पे हाइफन साइन यूज कर दे, मतलब सॉरी स्पेस की जगह, और प्लस साइन यूज कर देते हैं स्पेस की जगह. ठीक है. टेक्स्ट अपडेट कर देते हैं. नाउ सी द आउटपुट. देखो क्या है, प्लस की जगह क्या गया? प्लस की जगह स्पेस साइन. क्लियर है? क्लियर है? ओल्ड वर्सेस न्यू. ठीक है. And count equals to -1, you can specify the count, how many maximum you want to perform. So same example we are doing, but now this time we are passing one more parameter, that is 3. Now see the output. Okay, so it will replace only 3 spaces with 3 plus. Okay, so first space after between Rohit and Agrawal, second space between Agrawal and Ace, and third space between A's and A. Okay, so these 3 space will be replaced by this plus sign. Clear है? और example लिखना है. Suppose there are multiple spaces, you do not know, आपकी file है suppose, and आपकी file में suppose there are multiple spaces, जैसे कि हैं suppose I am just giving you the text example, you can read a file and in the text as well. So suppose there are multiple spaces and you want to replace this multiple spaces with the single space. तो क्या करेंगे? Multiple space लिखा यहाँ, single space लिखा. So all the multiple spaces, मतलब 2 spaces, all the 2 spaces will be replaced by single space. तो देखना यहाँ पे 2 space हैं between Rohit and Agrawal. ठीक है? You can check length of text. And you can check here also, so it will be more clear. See, ठीक है. देखो पहले लेंथ आपकी initially it is saying 33 length है, now it is 30 length because we have replaced this double space with the single space. So this will also used in your text processing and in your file processing. Clear? So these 3 I want to discuss. ठीक क्लियर है? ओके ठीक है. तो ये ठीक है. एक ज्वाइन मेथड भी है. ओके do you have any time, then we can discuss this join also, otherwise we will discuss in the next class. Hello. Yes. Okay, so we will discuss the remaining things in the next class. ठीक है. Next I think फिर आपकी class जनवरी में है ना?
शायद सर। यस सर, जनवरी में। ओके ठीक है तो है। ओके ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल 1 मिनट में ट्राई कर रहा हूँ इस ट्रिप का। जस्ट 2 मिनट, ठीक है, स्टे हियर फॉर 2 मिनट्स ओनली। ऑलराइट सर। ओके जस्ट 2 मिनट। ओके सो ये है कॉमा, लेट मी चेक। ओके ओके ठीक है, देन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं, ठीक है, जॉइन एंड रिमेनिंग पार्ट्स। क्लियर? ओके सर। ओके देन बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू, बाय।